हेलो डियर फ्रेंड्स बिजनेस हेल्पलाइन को आपण मान को बहुत बहुत स्वागत। आज आम देखा तरुण गोयल रो जनरल नॉलेज रो पार्ट नंबर 55 राजनीति विज्ञान व इंडियन पॉलिटी जोटे कि आम देखा बहीर संपूर्ण सारांश रहिबो परीक्षा रे पूरा अविकल प्रश्न जि पडुची से आम आज डिस्कशन करबा। आज आम देखा गोटे नुआ जिंस एटा प्राय तो यूट्यूब रे नाही, एटा बहुत बही रे मध्य नाही, एटा टिके रिसर्च करके जिंस अणाई छी। आपण जानि थांतो बेले बेले एसे आपण लिखुचंती विभिन्न ये ता ऊपर पढ़ले आप रिलेट कर लिख पारे। मॉडर्न हिस्ट्री वर्सेस आपणकर इंडियन पॉलिटी केमिति आसला है। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया कौन कवर्स द पीरियड फ्रॉम मिड 18th century to 1947, focuses on the British colonization, freedom struggle and socio-political reforms, includes the revolt of 1857 Gandhian movement and partition, includes the contribution of freedom fighters like Gandhi, Nehru, Bhagat Singh, Subhash Bose, studies importance of British economic policies on Indian society. The Indian Constitution came into force on 26 January 1950. Focuses on the governance, law and citizen right in independence India. Drafted by the Constitution Assembly 1946 to 49, Dr. B. R. Ambedkar is the chief architect of the Constitution. The Constitution defines political structure, fundamental right, duty and directive principles. Similarly, historical background for modern history led to realization of self-rule and democratic ideas. Indian Constitution is the outcome of the freedom struggle. Events like Simon Commission in 1935 laid the groundwork for the constitution making. British law and exploration created demand for Swaraj, self-rule. National movements fostered unity and democratic spirit that it reflect in the constitution. तापर आइडियोलॉजी कौन था? मॉडर्न हिस्ट्री प्रमोटेड लिबर्टी इक्वालिटी नेशनलिज्म. द कॉन्स्टिट्यूशन इनसाइंस कौन कर लिबर्टी इक्वालिटी जस्टिस एंड फ्रीडम लिखी बोथ प्रमोट इंक्लूसिव एंड सेक्युलर वैल्यूज. सोशल रिफॉर्म्स कौन एग्जांपल होची एग्नेस्ट अनटचेबिलिटी फॉर वुमेन्स राइट बिगन इन द हिस्ट्री वर लेटर ग्रांटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तापर आसला द इंडियन लीडर लर्न फ्रॉम द ग्लोबल रिवोल्यूशन अमेरिकन फ्रेंच इन बोथ पेजेस. आपन कंटेंट भल अच्छे निश्चय लाइक सब्सक्राइब करूँ. ओपीएससी एस जब आपको स्टडी इबुक दरकार कि स्मार्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन दरकार डिटेल्स पढ़ू आप भल लगे क्यूआर कोड स्कान करूँ ना वीडियो जो देखुं तले कमेंट सेक्शन में मुझे लिंक देदेवी आप जानीपर. ओएसएससी और डबल एसएससी आपंकर जब किसी भी इबुक दरकार आप डिटेल्स पढ़ू पढ़ी सारा भल लगे क्यूआर कोड स्कान करूँ. जब असुविधा अच्छी मैंने वीडियो जो देखुं तले कमेंट सेक्शन में लिंक देखिपारे. नेक्स्ट आसला स्टिल जब किसी असुविधा हो व्हाट्सएप नंबर में दे दीजिए आप 9937932444 नंबर में व्हाट्सएप करेंगे. पार्ट 4 रे कौन आसला की पर्सनालिटीज जो मानते गांधी इन्फ्लुएंस्ड इंडिया पॉलिटिकल अवेकिंग. Ambedkar spread his legal foundation. Jawaharlal Nehru was a bridge between freedom struggle and democratic India. Sardar Patel helped it unity princely state post independent जोटा कि हिस्टोरिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पैक्ट पड़ता. बाल गंगाधर तिलक एंड अदर popularized Swaraj as a right realized in the constitution. Rajendra Prasad was the past president of the India and a member of both freedom and constitution making pages. Governance and political impact. Modern history, foreign rule, the constitution set up self-governance. From the colonial laws like Revolt Act and citizen rights जोटा कि like आर्टिकल 19 इज ए कंप्लीट रिवर्सल. हाँ बुझिपारे यहाँ रिवर्सल अच्छी यहाँ आप लिखे परीक्षा निश्चित भाव आप मार्क पाइबे. यहाँ कौन से निजे चिंता करूँ जब आपको किसी मिलूँ दुटा कौन डिफरेन्स अच्छी रिवर्सल आसला मैंने कमेंट सेक्शन जनातु. ओके. द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टाब्लिश्ड पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी. मॉडर्न हिस्ट्री गेव राइज टू मास मूवमेंट. The Constitution allows peaceful protection representation. Historical experience shaped law about civil liberties, then election and justice. तापर आसला मॉडर्न हिस्ट्री की डॉक्यूमेंट कौन. मॉडर्न हिस्ट्री रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश इंडिया एक्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. कॉन्स्टिट्यूशन कौन एक्सेप्ट कर प्रियम्बल फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड शेड्यूल्स. 1935 Government of India Act influenced the fundamental structure of the Constitution. Nehru Report 1920 it was an early draft of the Constitution demand. Indian Constitution is the longest written constitution in the world. Impact on society.
historical event focused on mobilizing the masses. Constitution ensure right to marginalized group, SC/ST, minority women. Abolition of zamindari and untouchability reflect goals from the both phases. History focuses on the freedom from British. Constitution focuses on the freedom within India. Both shape the modern India identity. अच्छा तापर हम टाइमलाइन को ଯିବା ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଥିବା ଏଇଟା ମଡର୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରି କହୁଛି mainly from 1757 battle of Plassey to 1947 independence ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କ'ଣ ହେଲା 1946 କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସେମ୍ବଲି ଫର୍ମଡ ହେଲା till କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1950 enacted ହେଲା many leaders of the constitution were also part of freedom struggle ହେଲା 1947 to 1950 was a transitional period for both historical and constitutional changes तापर कौन कौन घटना है ना कौन पे इम्पैक्ट है canonical injustice like Jallianwala Bagh triggered a demand for rights and justice now ensured through the fundamental right in the constitution movements like non-corporation in Quiet India emphasized mass participation which involved into universal adult franchise right to vote for all in the constitution. British divide and rule policy led to communal division. The constitution countered this led by declaring India secular and unified republic. The freedom struggle created leaders with democratic value, many of whom became the constitution farmer, ensuring continuity of vision. Economic exploration under the British rule inspired constitutional provision for socialist principle and directive principle of state policy DPSP to ensure welfare. The constitution aimed to remove caste-based and social inequality, a constitution of reform movement led by Phule, Ambedkar and Gandhiji. Modern Indian history shows the repeat denial of Indian voices in governance, like Simon Commission. The constitution granted representation federalism. The constitution provided for judicial review and the rule of law, which were absent during the British rule, where colonial laws were supreme. India's experience with British bureaucracy influenced the creation of all India services like IPS, IAS for a professional civil service under the constitutional rule. Overall, modern India history was the struggle, and constitution is the outcome in the framework to be preserve and advance the ideas of the start of that struggle. ପାଇଲେ ଏ ପୁରା ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାରିଜନ୍ ଦୁଇଟା କରିଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ହିସାବରେ କାମ କରିବ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ PSCS ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଇ ବୁକ୍ ଦରକାର ଆଇଦର ଷ୍ଟଡି ବୁକ୍ ଦରକାର କିମ୍ବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦରକାର ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ ଇ ବୁକ୍ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ OPSC OSSC ଛଡ଼ା ଆପଣ OSSC ଓ SSC ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ बुक्स हम पाक अवेलेबल अच्छे अपन देखिए जदि आपन कोडा भल लाउछ निश्चय लाइक से सब्सक्राइब करिवे आ क्यूआर कोड स्कैन करिवे ई बुक दे पारिवे ता सहित जदि किछ असुविधा अछि निश्चय हमरे तळे लिंक कमेंट सेक्शन रे आपन लिंक पाइ जिवे आज वीडियो ठीक थैंक यू सो मच।